is a hard fact of life. नमस्कार देवी और सज्जनों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरी YouTube चैनल फीयरलेस गेमिंग में। और आज जो है हम एक नई गेम की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसका नाम है गैंगस्टर वेगास। पबजी जो है वो बैन होने के बाद मेरे पास कोई भी ऑप्शन नहीं था और मेरे पास अभी इतना बजट भी नहीं है कि मैं एक गेमिंग पीसी बिल्ड कर पाऊँ, तो इसीलिए मैंने मोबाइल में खेली जाने वाली थोड़ी गेम्स को ढूंढा और उसमें से मैंने ये गेम को सिलेक्ट किया है। और हम इस गेम के एपिसोड जो है वो हमारी चैनल पे अपलोड करने वाले हैं और बहुत ही एंटरटेनमेंट रहने वाला है आपके लिए भी और मेरे लिए भी। तो लास्ट तक देखिए और अभी तक अपने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूले। और ये जो पार्ट है इसमें सिर्फ आपको स्टोरी देखने को मिलेगी, तो वो देखते रहिए और आपका प्यार जो बनाए रखे ताकि हमारे 200 सब्सक्राइबर जल्दी से जल्दी कंप्लीट हो जाए। Those who work with me, those who understand the system, they get taken care of, Jason. Do you understand what I'm saying? You, down, in the fourth. Miss Montello? Who the hell is this? You don't know me, but I'm Jason Malone. I'm Paul O'Reilly's cousin, and Molly. he's fine. You still with that girl with the lip? Oh no, she got that fixed, didn't she? Paulie said I could contact you if I ever got into trouble, and I'm in trouble. Talk to me, sugar. What's the matter? Shit, Frank! You talking about Frank Belliano? He's following me on Fremont. He's gonna fucking kill me! Damn it! I didn't mean to knock him out. Doesn't matter, kid. I swear, I didn't mean to... I'm guessing you're the one who called? Yeah, yeah. Come on, let's go. So, I guess this is the part where I thank you and ask your name and stuff. No, this is the part where you take this gun and shoot at the assholes behind us while I drive. My brothers and I used to shoot at dock rats back in Southeast. Right, well, looks like we've got more rats on our tail. It's Karen, by the way. Huh? My name, Karen. Ah, and you work for Miss Montello? I'm her accountant, among other things. Man, these pricks are after you. What
did you do? I won a fight I wasn't supposed to win. That was you? I didn't mean to knock the bastard out. He just went down. Barricade up ahead. Shoot at it! Shoot at it! Can we help you, ma'am? Guess the donut breaks over. You been hitting the sauce tonight, ma'am? No, sir, officer. I've been hitting the sauce all day long. Are my eyes fooling me, or am I looking at Vera Montello? Who? Wife of the late Johnny Montello. Before your time. Scum of the earth, this guy. Used to run this town before he got whacked. As much as I'm enjoying this walk down memory lane, I think I'll just be leaving. Okay, come on, Grandma. Let's get you back to the old folks' home. No! If I ever hear my Johnny's name pass through your lips again, I'll cut him off. Old girl still got it. Vera, did you just knock out 2 cops? How? You found the tequila, didn't you? You thought I wouldn't look behind the washing machine? Hey, I'm impressed you know that we have a washing machine. That thing was rusted over when I found it. Can we chat domestic troubles later? We need to get out of here. My thoughts exactly. You the kid? Yeah, Jason. You drive. Drive what? The truck! Shouldn't we go to the police? Frank's trying to kill me. The cops are on Frank's payroll, just like the rest of this town. Just drive, kid. We'll worry about Frank later. Head north to the strip. I gotta get me one of these. Handles like a dream. It may not be a Galapino, but it'll bust through any police blockades. Nice! Guess you've had to shake cops before. Probably after they found out you were shooting all those rats. What can I say? Boston's finest protect the rights of man and vermin. Nice one, kid. I'll drink to that. Congratulations, kid. You're a rising star on Vegas's most wanted list. Karen, gun. Catch. This is not going well. Get away! Well, that was a gas. More fun than I've had in a long time. Karen, tell Jason that if he just gives me a little time, I think I can work things out with Frank. It's delicate, but we'll figure it out. You do know I'm standing right here. So now what? We're good here. It's safe. Just, lay low for a while. We'll be in touch.
तो भाई लोग, जैसे आपने स्टोरी में देखा कि हमारे ये जेसन भाई साहब है, उसके पीछे थोड़े बहुत तो गुंडे पड़ गए थे और उसने सीधा कॉल लगाया थे मिस मोंटेलो को और उसने इसे बचा लिया है। और अभी जो है इसे मिशन दे रही है वो मिशन के लिए निकलने वाले हैं। तो जल्दी से निकलते हैं हमारे मिशन के लिए। और मिशन में क्या है कि हमें कोई ई-मैन जो है उसे मिलना है, तो फटाफट से उस ई-मैन को मिलते हैं हम। तो फटाफट से निकाल लेते हैं हमारी ये मस्टैंग। अरे मस्टैंग तो नहीं है, कोई और ही गाड़ी है, लेकिन थोड़ी बहुत मस्टैंग जैसी लगती है और चलने में भी बहुत ही बढ़िया है। तो फटाफट से जाते हैं जहाँ पर हमें मिशन मिलने वाला है उस जगह पर और फटाफट से कंप्लीट करते हैं हमारा पहला मिशन, हमारी ये गेम का पहला मिशन। तो चलिए जल्दी से निकलते हैं। इस भाई साहब के पास में मस्टैंग है। तो अभी हम जो है यहाँ पर पहुँच गए और यहाँ पर एक अजीब सा ई बना हुआ है। तो चलते हैं यहाँ पर और ई-मैन को यहाँ पर आप देख सकते हो। ई-मैन यहाँ पर पत्ते में हमको दिखाई दे रहा है, रनर ऑफ द रन। तो ये जो है मिशन का नाम है और हमें ये मिशन कंप्लीट करना है। और ये है मिस मोंटेलो जिसे जो हमें उस गुंडों से हमें बचाया है और यही हमें यहाँ पे मिशन देने वाली है और इस वेगास सिटी का गैंगस्टर बनाने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से इस मिशन को और पूरी गैंगस्टर ये वेगास सिटी को अपने गैंगस्टर बाजी से डरा देते हैं। तो पहले तो ये ई-मैन से हमें मिलना है और ये ई-मैन हमें कोई दूसरे मैन से मिलवाएगा। तो चलिए जाते हैं। और यहाँ पर पास ही में है, 30 मीटर करीब बता रहा है। तो गाड़ी क्या निकाले उसके लिए। तो ये है ई-मैन जिसे हमें मिलने आना था। Sometimes, sure, okay. Sometimes not so much. Depends upon your perspective, I guess. Right. Vera sent me. Excellent timing, for I have been attacked and fleeced by a dragon. A what? अरे भाई कितनी बातें करोगे, हमें एक तो इंग्लिश अंग्रेजी समझ में नहीं आता और आप इंग्लिश में बातें करे ही जा रहे हो। बस अब बस हो गया बस। और अभी जो है ई-मैन के साथ इसकी बात हो गई और इसने बोला तू मेरे पीछे पीछे आ, मैं तुझे उस आदमी से जो है मिला देता हूँ। और अभी जो हूँ ये जेसन भाई साहब वो उसको पीछे पीछे जा रहे हैं, ई-मैन के पीछे पीछे। और यहाँ पर 2-3 लोग खड़े हुए हैं। This is your dragon? I was expecting someone with a little less acne. Hey, little Joe, I think you got something of mine, something I really need back. Come on, you little punk. Hand over the formula, or drugs, or whatever, or my fists are gonna get creative with your face. Oh, shit! और अभी जो है इस भाई साहब को हमें पकड़ना है। Follow and take notes. ये भाई साहब भाग गए हैं तो उसे हमें पकड़ना है। तो चलिए फटाफट से पकड़ते इस भाई साहब को और इसकी धुलाई करता है। कहाँ जा रहे हो भाई, रुक जाओ, कहाँ तक भागोगे? You all right? Wish I could undo that sandwich that I did. Oh, I'm winded. I'll be faster without you. Go! Go! Fly! Don't let the dragon touch your jewel capsule! I could do this all day, little man. Stop chasing me! Leave me alone! Hold up, or I'm taking your lunch money. Stop chasing me!
और अभी बच्चा तो पीटेगा, बहुत ही दौड़ लिया तूने। ये ले ये ले। I hate to see a kid go down like that. So, you the Empress's new वो muscle? तो होंगे ना भाई, जिम Just जाता watching हूँ out हर to sort रोज। out some things with Frank Valiano. And now, I bid you good morrow. Thanks for the help. See you around. तो भाई लोग ये जो मिशन है कंप्लीट हो चुका है और इस मिशन को कंप्लीट करने के बाद हमें 9 डायमंड दिए गए हैं और बहुत ही बढ़िया है। डायमंड्स जो है वो हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है और आज के लिए सिर्फ इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। और ये जो गेम है आपको कैसा लगा इस गेम को देखकर और मज़ा आया कि नहीं, सब कुछ कमेंट में भर कर लिख दीजिए और मुझे भी कैसे इसमें कमेंट्री करनी चाहिए वो भी थोड़ा बहुत मुझे सजेशन दे दीजिए, क्योंकि एक तो मेरे लिए ये यूट्यूब चैनल भी नया है और ये गेम भी पूरी तरह से नया है। मुझे सिर्फ पबजी का एक्सपीरियंस था, लेकिन वो गेम जो है बैंड हो गई है, तो मुझे जो है अभी ये गेम खेलनी पड़ रही है और आपके लिए मैंने ये गेम शुरू की है। तो कैसे लगी आपको ये गेम ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।